I'm gonna start the session again, and I'm gonna go back to sharing my screen. Uh, Yesterday, we spoke of two things yesterday. Uh, we we spoke of two things yesterday. One was the fact that how does the Google algorithm work? Now, let's look at this screen. Do you remember this screen? Okay. Uh, my search term, when I went to Google, I made a search which had a string of two keywords. The two keywords were Austria tour. When I search Austria tour, two types of search results threw up. We called one set the organic results, which was at the bottom, and one set the inorganic results. Inorganic results are the ones which are ads. So you will see an AD ad written in a yellow box next to an ad. The first three are ads, obviously. Whatever you see on the right side are also ads. Uh, the stuff that doesn't have an ad tag on it, doesn't say AD on it, are organic results. So we said there are two types of consumers yesterday: people who uh, people who click on ads, and people who don't differentiate between ads and non-ads and still end up clicking on ads. And the second one was people who choose not to click on ads. And then we said, as a businessman, entrepreneur, anyone running a company, anyone running digital marketing, what's important for us is that we are always the first ad, because the first link obviously generates more clicks and more traffic than the second one, the third one, etc. So we need to be the number one link in the ads. And then we said we also need to be the number one link in the organic traffic, which is the first organic link that you see over here says 5-day best of Austria tours from Vienna to Salzburg. So what is it that we need to do? We need to be number one in ads, and we need to be number one in organic results. Then we said, yesterday we took up the part of becoming number one in the organic results. And in the organic results, the way to do that is called SEO, search engine optimization. We said, what is it that we need to do on our website such that our website becomes friendlier to the Google page rank algorithm in such a way that our website starts to become reach page one, rank one, which is for this set of keywords. If someone searches for Austria tour, our website should be in the place where viator.com is right now: 5-day best of Austria tour from Vienna to Salzburg. This is where we need to reach. So we said we need to make two types of changes to our website. We said we need to do search engine optimization, which is on page and off page. Things that we need to change on the website, on our website, on the front end and the back end of our website is called on page SEO. Things that we need to do at the back end of our website is called off page SEO. We need to do on page, oh sorry, things that we do off our website, not at the back end, not at the front end, but outside our website, which means through blogs, through articles, through social media, etc., which bring traffic to our website. It's like other websites saying that, hey, this is a good website, go and buy your product from there. These are called off-page activities, and we need to do on-page and both off-page SEO. Uh, and then we spoke of how to select keywords. The best top 25 keywords that define your business need to be on your SEO list. You need to find an agency which does your on-page as well as off-page SEO, and just ensure, as the definition says, make your website friendlier to the search engine algorithm. Optimize your website in such a way that the search engine algorithm tends to believe that you should be given page one, rank one for the set of keywords that the consumer is searching for. Then we said there are some black hat techniques of doing SEO, which is not important to us. So today we're going to move to the next part, which is uh, the ads part. We're going to talk about Google Ads. Now we are talking about the inorganic results and how do we become number one in the inorganic result space. Now, to become number one in the inorganic result space for a set of keywords, we have to ensure that we are again getting the first place in amongst all the guys who are trying to show ads. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 different people who are showing ads.
कंज्यूमर ने सर्च किया है ऑस्ट्रिया टूर एंड देयर आर 9 डिफरेंट पीपल हु आर सेलिंग पैकेजेस टू ऑस्ट्रिया. ऑब्वियसली एक्सपैट एक्सप्लोर जो पहला दिख रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया टूर अट्रैक्शंस expatexplore.com, obviously generates more clicks, more traffic than this guy. His name is Trafalgar, than Make My Trip, than JMM Travels, Edelweiss Tours, Austria TripAdvisor, Cosmos Vacations. ये सब लोग बाद में आते हैं, इसका एड सबसे ऊपर आता है. नाउ द क्वेश्चन इज, गूगल कैसे डिसाइड करता है कि इसका एड सबसे ऊपर आना चाहिए, एक्सपैट एक्सप्लोर का सबसे ऊपर आना चाहिए, और radstat.com का सबसे नीचे आना चाहिए? How does Google define the sequence by which these ads should show up? So Google has put its entire algorithm to work on the understanding of relevance. जो लॉजिक हमने यूज किया था ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में पेज 1 रैंक 1 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे सच दैट द गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम टेंड्स टू बिलीव कि जो कीवर्ड्स सर्च किए जा रहे हैं उन कीवर्ड्स के लिए माय वेबसाइट इज द मोस्ट रेलेवेंट वेबसाइट टू बी शोन टू द कंज्यूमर. द कीवर्ड हियर इज रेलेवेंस. गूगल का एल्गोरिथम रेलेवेंस ढूंढता है वेबसाइट में. इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स द सेम थिंग हैपेंस. गूगल जब देखता है कि ऑस्ट्रिया टूर जब कोई कंज्यूमर सर्च करता है तो 9 डिफरेंट लोग हैं, देयर आर 9 डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर ट्राइंग टू शो एड्स. तो गूगल ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है इन 9 लोगों की वेबसाइट्स या इन 9 लोगों के बिजनेसेस में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है फॉर द सर्च टर्म ऑस्ट्रिया टूर. द कीवर्ड सर्च इज ऑस्ट्रिया टूर. ऑस्ट्रिया टूर के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट एक्सपैट एक्सप्लोर देता है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट डेटा देता है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है कंज्यूमर को. हेंस ही शुड बी राइट एट द टॉप. नाउ मैंने बड़े इजीली ये बात कह दी दैट द गूगल एल्गोरिथम लुक्स फॉर द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट, जो सबसे ज्यादा अच्छा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है फॉर द सर्च कीवर्ड्स. बट रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट तो इज एन एडजेक्टिव. अब इस रेलेवेंट को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करना जरूरी है कि रेलेवेंस का मीनिंग क्या है. रेलेवेंस डिफाइन करने के लिए गूगल यूजेस द लॉजिक, or rather the algorithm uses the logic of giving each and every of these guys who are trying to show ads a quality score. Quality score. ये quality score क्या है? Quality score हर वेबसाइट जो अपने ऐड दिखाने चाहती है उसको अपना एक एक क्वालिटी स्कोर मिलता है फॉर द सर्च टर्म ऑस्ट्रिया टूर. मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रिया टूर जब कोई कंज्यूमर सर्च करता है, ये 9 लोग अपने एड्स दिखाना चाहते हैं. 9 लोग जब गूगल के डैशबोर्ड पे जाते हैं, गूगल को बताते हैं कि जब कोई ऑस्ट्रिया टूर सर्च करेगा तो हमारा ऐड आना चाहिए, तो गूगल इन 9 लोगों को एक क्वालिटी स्कोर असाइन करता है फॉर दिस सेट ऑफ कीवर्ड्स ऑस्ट्रिया टूर. द प्रोसेस बाय विच all these guys are able to show ads when someone searches for a certain set of keywords is called Google AdWords. आपने बहुत ऑफन ये क्वेश्चन सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड एजेंसीज टॉक अबाउट दिस, कि गूगल एडवर्ड्स कैंपेन करना चाहिए. एडवर्ड्स कैंपेन का मतलब ये है दैट इट अलाउज यू, और गूगल गिव्स यू अ डैशबोर्ड. गूगल आपको एक स्पेस देता है जहां पे आप खुद लॉग इन कर सकते हैं, एंड उस डैशबोर्ड पे जाके आप खुद वहां पे डाल सकते हैं द कीवर्ड्स जिस पे आपको आपके एड्स दिखाने हैं. So what is happening is these 9 people are going to the Google AdWords dashboard. They are telling Google के Google हमें ये ऑस्ट्रिया टूर जब कोई सर्च करता है हमको हमारा एड दिखाना है. एंड जब ये 9 लोग वो करते हैं तो गूगल क्या करता है? गूगल देखता है ऑस्ट्रिया टूर से रिलेटेड सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किसके वेबसाइट्स पे है. इट चेक्स फॉर अ few parameters. One of the parameters is क्या ऑस्ट्रिया टूर इनके एड में, एड की जो कॉपी है उस एड कॉपी के अंदर ऑस्ट्रिया टूर वर्ड है कि नहीं. जैसे यहाँ पे जो पहला एड है उस पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया टूरिस्ट अट्रैक्शंस expatexplore.com. तो गूगल सबसे पहले देखता है कि इस एड कॉपी के अंदर ऑस्ट्रिया टूर वर्ड है कि नहीं. गूगल ये देखता है कि जब कोई इंसान ऑस्ट्रिया टूर के
जब कोई इंसान ऑस्ट्रिया टूर कीवर्ड पे अपना ऐड दिखाने की कोशिश करता है, तो गूगल ये देखता है कि उस वेबसाइट उस ऐड दिखाने के बाद वो कंपनी कंज्यूमर को कहाँ पे लेके जाने वाली है, कौन सी वेबसाइट खुलने वाली है। जो वेबसाइट खुलती है आफ्टर क्लिकिंग ऑन एन एड, दैट वेबसाइट इज कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। ठीक है। सो एक्सपर्ट एक्सप्लोर ने अपना ऐड दिखाया है। दे आर ट्राइंग टू दे आर ट्राइंग टू शो देयर ऐड व्हेन समवन सर्चेस फॉर ऑस्ट्रिया टूर, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द फर्स्ट ऐड, जो पेज खुलता है, दैट पेज इज कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। नाउ व्हाट द गूगल एल्गोरिथम ट्राइज टू डू इज, गूगल एल्गोरिथम ट्राइज टू आइडेंटिफाई कि कौन जो वेबसाइट्स अपना ऐड दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उन सबका लैंडिंग पेज कितना स्ट्रांग है। विच मीन्स इन सब वेबसाइट्स के लैंडिंग पेज पे कितना ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द कीवर्ड दैट्स बीइंग सर्च फॉर। इन दिस केस इट्स ऑस्ट्रिया टूर। सो ऑफ ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू शो एड्स, एक्सपैट एक्सप्लोर सबसे ऊपर इसलिए है बिकॉज एक्सपैट एक्सप्लोर सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑस्ट्रिया टूर्स। गूगल को कैसे पता चलता है रेलेवेंस? क्योंकि गूगल ने एक क्वालिटी स्कोर दिया है एक्सपर्ट एक्सप्लोर को, बेसिस द एड कॉपी, जो यहाँ पे एड लिखा हुआ है, बेसिस द लैंडिंग पेज, उस पे कितनी इंफॉर्मेशन है ऑस्ट्रिया टूर के बारे में, और ऐसे कई और पैरामीटर्स हैं। जैसे वन ऑफ द पैरामीटर्स द गूगल एल्गोरिथम यूजेस इज एक्सपर्ट एक्सप्लोर ने पहले कितनी बार गूगल कैंपेन्स किए हैं और उन कैंपेन्स में किस तरह का रिस्पॉन्स आया। इफ द रिस्पॉन्स वॉज गुड, दैट मीन्स एक्सपर्ट एक्सप्लोर इज अ रेलिवेंट वेबसाइट, इट्स अ गुड वेबसाइट, इसको बेटर क्वालिटी स्कोर देना चाहिए। ओके, नाउ ऑल दीज पीपल, all the 9 people who are trying to show their ads, all of them have received a quality score for this set of keywords Austria tour. So, as a business, आपके लिए important क्या है? As a business entrepreneur, uh, as anyone running digital marketing for any company, आपके लिए important ये है कि आप अपने business को study करिए और सबसे पहले identify a set of keywords, जो कीवर्ड से आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी को सर्च करने की कोशिश करेगा। एंड व्हेन द कंज्यूमर सर्चेस फॉर दीज कीवर्ड्स, आप उस कीवर्ड्स के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने लैंडिंग पेजेस, अपने वेबसाइट पे डालिए इन सच अ वे दैट जब ये सर्चेस हो तब, और जब आप अपने एड्स चलाएं उन कीवर्ड्स के लिए, तब आपका क्वालिटी स्कोर सबसे ज़्यादा हो एंड आप सबसे ऊपर दिखाई दे ऑफ ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू शो देयर एड्स। ओके, नाउ I'll give you very typical examples of what really happens in Google advertising. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट एक्सप्लोर ने ऑस्ट्रिया टूर कीवर्ड्स गूगल को बताए हैं कि ये जब कीवर्ड कोई सर्च करेगा मेरा ऐड आना चाहिए। प्लस एक्सपर्ट एक्सप्लोर ने ऑस्ट्रिया टूर्स के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने पेज में डाल रखा है। सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल एक आर्बिट्री नंबर ले लेते हैं कि एक्सपर्ट एक्सप्लोर का सपोज क्वालिटी स्कोर था 4 एंड ट्रैफलगर का जो उसका नेक्स्ट रिजल्ट है एड रिजल्ट, उसका लेट्स से उसका क्वालिटी स्कोर था 3। तो जब ट्रैफलगर देखता है कि ट्रैफलगर को ऑस्ट्रिया टूर का एक्सपर्ट एक्सप्लोर का क्वालिटी स्कोर दिखाई नहीं देता है, बस उसको एक्चुअली नेचुरली सर्च करके ये पता चल जाता है कि यार मेरे ऊपर एक आदमी है जो एक्सपर्ट एक्सप्लोर है और मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ जब मैं एड्स दिखाता हूँ। तो ट्रैफलगर क्या करता है? ट्रैफलगर खुद जाता है एक्सपर्ट एक्सप्लोर के वेबसाइट पे और खुद देखता है कि यार उसने क्या कंटेंट डाला है ऐसा अपने लैंडिंग पेज पे दैट इसका क्वालिटी स्कोर हमेशा मुझसे बेटर आता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफलगर रियलाइजेस दैट यार इसने ना बहुत सारे अच्छे वीडियोस डाले हैं ऑस्ट्रिया के बारे में, इसने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है ऑस्ट्रिया के ऊपर, विच इज वाई उसका लैंडिंग पेज ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर समवन सर्चिंग फॉर ऑस्ट्रिया टूर्स, which is why he gets a better quality score than me. I'll come back to the point where we were discussing the fact that in the ad results, the first guy who's able to show his ad is called Expat Explore and is at number 1. And there is a guy called Trafalgar.com who's at number 2, जिसने अभी अभी ये देखा है कि his landing pages are not as strong, his ad copies are not as strong, इस वजह से वो नंबर 2 पे आता है ad में
instead of number one. Number one is obviously Expat Explore. Um, so what does Trafalgar really do? Trafalgar copy करता है, सीखता है और अपने landing pages और strong कर देता है. Now when Trafalgar makes stronger landing pages and better ad copies, it may so happen that Trafalgar का भी quality score Expat Explore जितना हो जाए. Let's say for example, Trafalgar का पहले quality score 3 था, अब 4 हो गया. Expat Explore already 4 पे था. Now there's a dichotomy for the Google algorithm कि between these two किसका ad ऊपर आना चाहिए, because दोनों का quality score same हो गया है. In a case where the quality score is same, Google then switches to the next thing to identify uh, who has a better cost per click that they're paying to Google. Now, what is cost per click? This is the bid value. Google फिर ये देखता है कौन ज्यादा पैसे दे रहा है per click to be at the top of the ad results. Let's say Expat Explore per click 20 रुपए देने के लिए तैयार था and Trafalgar अब 25 रुपए देने के लिए तैयार है. So immediately when someone searches for Austria tour again, next time Trafalgar number 1 पे आएगा and Expat Explore number 2 पे चला जाएगा. Because एक obvious question हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका quality score इतना अच्छा नहीं हो, but they can tell Google that I am ready to pay more money cost per click. मैं ज्यादा पैसे दूंगा, मैं ज्यादा बिड करूंगा ताकि मेरा ad ऊपर आ जाए, भले ही मेरा quality score अच्छा नहीं हो. But that doesn't fly with the Google algorithm. And so I was saying there could be a lot of people जो ads दिखाना चाहते हैं और Google algorithm में ये feed करते हैं कि भले मेरा quality score कम हो, लेकिन मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ per click. And in that case, because I'm ready to pay more money, मेरा ad ऊपर दिखाई देना चाहिए. But the Google algorithm doesn't work that way. जिसका quality score सबसे highest होता है, जो सबसे ज्यादा relevant content डालता है अपने ad में, उसी का ad सबसे ऊपर आता है. Does quality score depend only on the landing page or something else also? As I was saying, quality score depends on the landing page. It also depends on campaigns that you have run previously. Uh, uh, and it largely looks at your landing page and also your website. So suppose your landing page is running on your website. Normally आपकी website होती है www.abc.com और आप एक लैंडिंग पेज बना देते हैं कॉल्ड www.abc.com/offers. सो ये जो आपने नया पेज बनाया है ऑफर्स, दिस इज योर लैंडिंग पेज. ये इस पेज का क्वालिटी स्कोर इस पेज को भी देखता है एंड इट ऑल्सो लुक्स एट बैकवर्ड्स ऑन योर वेबसाइट, हाउ क्रेडिबल इज योर वेबसाइट, और आपके जो मेन डोमेन है, जो मेन वेबसाइट है, उस पर कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है फॉर द कीवर्ड्स दैट इज बीइंग सर्च फॉर. Okay. Is the Google algorithm 100% foolproof and authentic? Good question. A lot of people actually question Google for the algorithm being authentic. Well, the algorithm is not open to everybody. First of all, it's like a business secret. It's an algorithm they've developed, which is not completely visible to everybody. But Google claims that it's absolutely fair. And also, what happens is, there's a lot of people asking these kind of questions on Google and questions to Google, and a lot of people question Google's validity and authentication on this. So I guess they have to keep it foolproof and authentic, because if they don't do it, it'll be very easy for them to create monopolies across countries. So I don't think I think it's pretty much industry accepted right now. Everyone knows कैसे गूगल पे एडवर्टाइजिंग चल रही है, कैसे इन एड्स पे बिडिंग करनी चाहिए. ओके. अगर हमारी एड्स, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ केयूर गाड़ा का, अगर हमारी एड्स नंबर 1 पे आती हैं तो क्या ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक रिजल्ट भी अपने आप नंबर 1 हो जाएगा क्या? नहीं केयूर, दैट डजंट वर्क दैट वे. एड रैंक एल्गोरिथम इज डिफरेंट फ्रॉम the search engine algorithm, the page rank algorithm.
सर्च इंजन पेज रैंक एल्गोरिथम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए है, वो ऑर्गेनिकली देखता है आप कितने रेलेवेंट है। और एड रैंक एल्गोरिथम है, वो आपका रेलेवेंस देखता है फॉर द एड्स दैट यू नीड टू शो। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा एड्स करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अगेन फिर एक मोनोपोलिस्टिक इशू क्रिएट हो जाता है कि जो लोग ज़्यादा एड्स दिखाते हैं फिर वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली हमेशा जीतेंगे। बट दैट्स नॉट द आइडिया। द आइडिया इज जिसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा रेलेवेंट है, वो नंबर वन बनेगा। ओके, I'm going to take more questions. What shall be the budget to get results in ads? Okay, what should be the budget? जब आप Google AdWords कंसोल पे जाते हैं, एंड मैं आपको कंसोल शुरू करना सिखा दूंगा इस क्लास में, बट उसके आगे आपको खुद करना चाहिए। जब आप कंसोल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो ऑलरेडी आपको सजेस्टेड बिड देता है। तो जब आप कीवर्ड्स डालते हैं, गूगल एल्गोरिथम खुद आपको बताता है कि करंटली इन कीवर्ड्स पे इस तरह के बिड्स चल रहे हैं। if there is a cost per click bid that's happening, तो एल्गोरिथम आपको खुद डिफाइन कर देता है कि नॉर्मली टू गेट द फर्स्ट एड रैंक people are bidding about say 18 rupees CPC, 18 rupees per click. So you know that okay, to be number one, that's what I should bid. But if your quality score isn't high, you will not be at the first place. You will be at the second place. What's the cost that will be charged to you? You will be charged the next currency denomination. So I think in India it's 10 paise or $1. So जो bid सबसे हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर वाला इंसान डालता है, उससे अगर उसने 18 रुपए डाली है तो आपको सेकंड प्लेस मिल जाती है एट 19 रुपीज। ओके, व्हाट इज अ गूगल कैंपेन? वेल, गूगल एडवर्ड्स के कंसोल पे जाके जब आप अपना एक एडवर्ड्स कंसोल पे पूरा कैंपेन क्रिएट कर, व्हाट्स अ कैंपेन? इट्स बेसिकली द मैकेनिज्म जिससे आप अपने एड्स शुरू कर सकते हैं। आपको गूगल में जाके लॉग इन करके गूगल एडवर्ड्स में आपके कीवर्ड सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि इन कीवर्ड्स को दिखाए, जब जब ये कीवर्ड सर्च किए जाएंगे तब मेरा एड दिखना चाहिए, एंड दैट्स कॉल्ड अ कैंपेन। Tips for a startup to make better quality score page. Well, don't think of creating a page with better quality score. Think of creating multiple pages on your website for different search queries that people will do. तो अगर आपका एक बिजनेस है, उसमें 4 मेजर प्रोडक्ट्स है जो आप बेचते हैं, सो फॉर ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स क्रिएट लैंडिंग पेजेस जिन पे उस सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, एंड इंश्योर दैट उस लैंडिंग पेज पे वो सारे कीवर्ड्स हैं जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो एक इंसान प्रोबेबली सर्च कर सकता है. सो व्हेन पीपल सर्च फॉर दोस कीवर्ड्स, there should be a higher propensity and a higher probability for your page to come up, because it has more relevant content than most other pages which have similar products or define or describe a product like yours. Okay, I will take more questions. Okay, what if our landing page, I'm looking at Lalchan Kataria's question. What if we first and our landing page is the best, but the second best pays more than us? Oh, I've answered this already. अगर आपका quality score सबसे ज़्यादा है and the next guy is paying more than you, so suppose आपका quality score best है, आपका bid 17 रुपए है, and there is somebody else जिसका quality score आपसे खराब है लेकिन वो 19 रुपए दे रहा है, तो आपका ad दिखाया जाएगा at 17 rupees. You will be charged 17 rupees. Now, how this algorithm actually works is, or how the Google dashboard works is, जब आप Google में साइन इन करते हैं एडवर्ड्स में, तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने पड़ते हैं, और अगर आप कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग कर रहे हैं, हर क्लिक पे आप कुछ बिड लगा रहे हैं डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए, कहीं आप 17 रुपए बिड कर रहे हैं, कहीं 15 कर रहे हैं, कहीं 10 रुपए कर रहे हैं, दिन भर में जितने भी क्लिक्स होते हैं, जो आप जितनी बार आप आपका एड डिस्प्ले हुआ और लोगों ने क्लिक किया है, उतने क्लिक्स का टोटल अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे. ओके, अगर आपको बिडिंग के ऊपर और सीखना है, गूगल एडवर्ड्स कंसोल कैसे चलता है उसके बारे में सीखना है, कुछ बेसिक्स मैं इसी क्लास में कवर करूंगा. एंड व्हाट यू कैन देन डू इज, आप खुद जाके गूगल के वेबसाइट पे ही देख सकते हैं
गूगल ने खुद काफी सारे वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल बनाया है ऑन हाउ बिडिंग वर्क्स, हाउ एल्गोरिथम्स वर्क, एंड आप वो स्टडी करके खुद उसको बेटर सीख सकते हैं. Honestly, my advice is that if you're doing this for the first time, if you're a mid-size SME, if you're a mid-size business, don't try to do this yourself. Hire an agency, hire somebody who is good at this already. बहुत सारी एजेंसीज हैं मार्केट में जो बहुत अच्छा गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग करती हैं, एंड ये एजेंसीज आपके लिए काफ़ी अच्छे से बिड कर पाएंगी. इनको बिडिंग स्ट्रेटजीज पता होती है, इनको पता होता है कितनी बजे कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा बिड करना चाहिए, कब कम बिड करना चाहिए. उनको लार्जली अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपकी कैंपेन का बेस्ट रिजल्ट कैसे आएगा. सो यू शुड लीव इट टू देम. आई मीन यू कैन लर्न इट एंड डू इट योर सेल्फ, बट वॉट विल हैपन इज जब आप खुद बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, यू विल एंड अप स्पेंडिंग सो मच मनी. बहुत सारा पैसा लग जाएगा आपका खुद ये कैंपेन सीखने में, एंड यू विल रियलाइज के रिजल्ट्स नहीं आए हैं. रादर आप किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए, ये लेट देम ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, उनको चलाने दीजिए कैंपेन, उनको बिड्स मैनेज करने दीजिए, बट आप देखते रहिए क्या हो रहा है. सो उस उस डैशबोर्ड का जहाँ से बिडिंग चल रही है, वो डैशबोर्ड का पासवर्ड आप अपने पास भी रखिए. कीप चेकिंग व्हाट्स हैपनिंग सो दैट आप सीखते भी रहें. प्लस आपको भी आना चाहिए कि एजेंसी को सही सवाल क्या पूछना. लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज एजेंसीज आपको बहुत सारा घुमा देती हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग, बिकॉज दे नो दैट यू डोंट नो, दे ट्राई टू they try to misdirect you. So if you keep watching what they're doing, and if you have basic understanding of Google AdWords, then you know what are the right questions to ask. For example, one question I saw in the questions asked to me was, is $17 too high? Am I putting too much money for every click? Now the question is not that is $17 too high. The question is that आप जितना भी बिड कर रहे हैं पूरे दिन में, of all the bidding that you've done, how many clicks have you generated? And of the clicks that you've generated, how much sales has come in? If the sale value, the total money that you're making from that sale, and the net profit that you're making from each sale keeps you cash positive, keeps your margins right to run a Google campaign, then you should continue. The whole idea of running Google campaigns, and this is just basic business math, अगर ये कैंपेन से मुझे इतना अच्छा ट्रैफिक आ रहा है जिससे सेल भी कन्वर्ट हो रही है, जिससे मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पा रहा हूँ, मेरा नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, देन आई विल कंटिन्यू विद द कैंपेन. इफ नहीं हो रहा है, देन आई विल ऑब्वियसली आस्क क्वेश्चंस टू माय एजेंसी के वो क्यों बेटर नहीं कर पा रहे हैं. Is per click costing only for organic results, or it is also for inorganic results? Well, as I was saying yesterday, organic results completely crawler based है. Organic results में number one होने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते. You just have to make good content. You just have to make websites, landing pages which have very relevant content for the set of keywords that are related to your business. You cannot pay Google for that one. Okay. Haim Veera has asked a question. Wouldn't that be unfair for other businesses who have good content but don't get listed on the top because other inferior websites is ready to pay more? As I was saying him, that doesn't happen because if your content is better, then organic results में आप already ऊपर रहेंगे. Automatically आप आपकी page rank अच्छी हो जाएगी. अगर आप वो inferior website दोनों ads चला रहे हैं, तो even in the ads, your ad rank will be higher than your competitors if you have better content. So you don't need to really see it as a worry. Okay. How is the cost per click decided? Is it a standard across ads or is it set by Google? Cost per click is not really decided by anybody. What really happens is, for every keyword that you see actually right now that's being searched on Google, there is a market set value that's already there, and that's because कोई ना कोई हर कीवर्ड पे बिड कर ही रहा है. So हर कीवर्ड के लिए एक नेचुरल बिडिंग वैल्यू सेट हो जाती है. I'm not sure of this, but I hear from some media planners जो बताते हैं कि Google कुछ keywords की वैल्यू सेट कर देता है, एक बेस मिनिमम सेट कर देता है, which is very low.
एंड ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एक बिड वॉर होने लगता है. ऑल businesses which need those keywords start bidding on those keywords, and then automatically the prices rise. Okay. Can we combine with other websites to raise our website's rank? Very good question. Well, combine is not really the good word, but a good word is that you can increase, and I'm talking especially in the organic space. In the organic space, you can increase the page rank for your website if multiple other websites who generate high traffic redirect traffic to your website. इसको बैकलिंकिंग बोलते हैं. आपने देखा होगा वेरी ऑफन फॉर अ लॉट ऑफ, आप कोई भी नई चीज सुनते हैं, कोई नया कीवर्ड सुनते हैं, आप उसे गूगल करते हैं तो आप देखते हैं विकीपीडिया की वेबसाइट ऊपर आती है. नाउ विकीपीडिया इज अ टिपिकल एग्जांपल. विकीपीडिया की वेबसाइट बार बार हमें क्यों दिखाई देती है गूगल पे? बिकॉज विकीपीडिया इज वन वेबसाइट जिसने बहुत सारी बैकलिंक्स जनरेट कर रखी है. देयर आर लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स जिनमें कोई भी जार्गन होता है या कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसकी जिसकी एक्सप्लेनेशन, जिसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस वर्ड का मीनिंग सीधा विकीपीडिया पे एक्सप्लेन कर देते हैं. नाउ बिकॉज लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर डूइंग दिस, ऑटोमेटिकली विकीपीडिया को इतने ज्यादा बैकलिंक्स मिल गए हैं, इतने सारे हाई ट्रैफिक जनरेटिंग एंड ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स विकीपीडिया को ट्रैफिक भेज रहे हैं कि ऑटोमेटिकली विकीपीडिया का पेज रैंक हाई हो गया है. सो well, the word is not combined with other websites, but if you work with other websites who can send you traffic, then automatically your page rank will become better. Now we're on Google history. Now what happens when मैं एक नए ब्राउजर पे गया और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ब्राउजर में लिखा गूगल हिस्ट्री. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे ही प्रोफाइल का फोटो है. आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन टू गूगल. सो गूगल जानता है कि राइट नाउ हु हैज लॉग्ड इन टू द सिस्टम. ओके, सॉरी यहाँ पे नाम कुछ और लिखा हुआ है, बट ये मेरा ही अकाउंट है, इसमें कबीर शर्मा लिखा हुआ है. सो गूगल नोज राइट नाउ कबीर शर्मा इज लॉग्ड इन. व्हेन आई सर्च फॉर गूगल हिस्ट्री, आप सबसे पहला लिंक देखते हैं myactivity.google.com. वेलकम टू myactivity.google.com. ये myactivity.google.com क्या है? इट्स वेरी सिंपल. myactivity.google.com एक्चुअली, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, जो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, बट अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, सो गूगल मुझे बताएगा, इट विल शो मी एवरीथिंग दैट आई हैव एवर सर्च फॉर ऑन गूगल ever in my life. Yeah, it's scary. But myactivity.google.com, because I'm already logged in, और rather एक आईडी यहाँ पे लॉग्ड इन है जिसका नाम है कबीर शर्मा. कबीर शर्मा ने आज तक जो भी सर्च किया है वो इस लिंक पे दिखाई देता है. इसका कहने का मतलब ये है दैट कबीर शर्मा के लाइफ के सारी सर्चेस कहीं ना कहीं गूगल के एक सर्वर पे सेव्ड है. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अपना खुद ब्राउजर खोल के अभी अपने खुद की माई एक्टिविटी देखने की कोशिश कर रहे होंगे. आई एम श्योर देखिए, डोंट वरी, ये माई एक्टिविटी आप खाली खुद देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता है, बिकॉज यू आर लॉग्ड इन इनटू जीमेल, और यू आर जस्ट लॉग्ड इनटू गूगल और एनी ऑफ गूगल्स एप्लीकेशंस like GPS maybe. Agar because you're on Google and you're logged in, that's why it's showing you your activity. In most likelihood your phone is with you. आपके फोन में जब आप आपकी एक्टिविटी देखेंगे, it will show you everything that you've searched for. It will show you every single app that you've opened. It will show you every single place that you've been to. मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी एक्टिविटी नहीं देख सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट एक दूसरा गूगल क्रोम खोलिए, वहां पे लॉग इन करिए इनटू योर जीमेल, देन ओपन अनदर गूगल क्रोम, और उस गूगल क्रोम में जाके सर्च करिए गूगल हिस्ट्री, एंड देन यू विल रियलाइज आपने आज तक जो सर्च किया है वो सब अवेलेबल है. सो ओके, वर्ड ऑफ कॉशन, जो लोग घर पे हैं, घर का लैपटॉप यूज करते हैं, हर कोई आपका लैपटॉप यूज करता है. Yes, it's true. Your family, if you're already logged into that system, your family can see what have you been searching for, what have you been doing on the internet. Uh, they can know where have you been, where the different places that you've been going to. So yeah, be careful. Uh,
Is Google history deletable? Yes, it you can delete it. But having said that, let's be honest. Everything that you're searching for, every place that you're going to, every single app that you're opening, everything is being saved somewhere on a Google server. Okay, everything. Now, the obvious question that some of you may have in your mind, and I can see people asking me that question already, that well, what if I use incognito? Well, I'd suggest you may want to believe that if not Google, somebody else, if not Google, then maybe somebody else is saving your data. But the point I'm trying to make is that whatever you do on any device, that device is able to capture that data. For example, your search history is getting captured in Google. Uh, so Google basically करता क्या है? Google आपके सर्च हिस्ट्री के हिसाब से जो भी आप इंटरनेट पे करते हैं उसके हिसाब से आपका एक प्रोफाइल बनाता है. Okay, it knows you as a person. In this case, I am logged in by the name of Kabir Sharma. Kabir Sharma का Google ने एक प्रोफाइल बना रखा है अपने बैकएंड सर्वर में कि कबीर शर्मा ऐसी जगह जाता है, इस टाइप की चीजें सर्च करता है. उसके पास एक पूरा आइडिया है इस पर्टिकुलर एंटिटी का जिसका नाम है कबीर शर्मा. गूगल ये डेटा दूसरे ब्रांड्स को अवेलेबल करता है सो दैट अदर ब्रांड्स कैन शो एड्स टू पीपल लाइक Kabir Sharma. And Google is able to show these ads to Kabir Sharma. And Google directly brands को ये नहीं बताता है कि मैं कबीर शर्मा को तुम्हारा एड दिखाने वाला हूँ. गूगल खाली ब्रांड्स को ये बताता है कि ऐसे प्रोफाइल के, so let's say for example Kabir Sharma is male, lives in Bombay, is 24 years old, etc. तो गूगल खाली ब्रांड्स को बताता है कि आप कबीर शर्मा आप एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट कर सकते हैं जिसकी पुरानी सर्च हिस्ट्री ऐसी है, उसकी आदतें ऐसी है, इन टाइप के सर्च चीजें वो सर्च करता है, बॉम्बे में रहता है, 24 साल का है, मेल है. जो इन्फॉर्मेशन गूगल कैप्चर करता है वो इन्फॉर्मेशन गूगल अवेलेबल करता है ब्रांड्स के लिए. एंड देन ब्रांड्स कैन शो एड्स टू दीज ऑडियंसेस. इसे टारगेटिंग कहते हैं. दिस इज हाउ ब्रांड्स आर एबल टू टारगेट पीपल through Google. And not just Google, actually Facebook does the same thing too, Twitter does the same thing too, LinkedIn does the same thing too. So every platform in today's day and age is constantly creating profiles of people and then targets people by profiles. So I'll quickly move back to a slide and I'll show this to you. uh, I call it the crux of targeting. The crux of targeting lies here. Every different application that you're using creates a profile of you. A profile of you is created by all the information that you share with them. Age, for example, age तो आपने share करी रखी है because when you made a Gmail account, Yahoo account, a Facebook account, आपने खुद ही आपकी date of birth enter की थी. आपने आपका gender भी enter किया था. Well, it captures your location as well. आप जहाँ जहाँ गए हैं वो सब कैप्चर होता है. अगर आप चाहें तो आप खुद अपनी जीपीएस हिस्ट्री देख सकते हैं. आपके जीपीएस में ही सेटिंग्स में ऑप्शन है of your GPS history. It will tell you where all you've been. You may not want to tell your spouse that. I'm just joking, but the point is that everywhere that you're going, the device is actually tracking you. All these apps know your interests. What are you interested in? And they know what you're interested in because you've already liked certain pages. You've already commented on certain brands. You have emails that you exchange with certain brands. So they know what you're interested in. All these apps know what kind of friends you have because you share your contact lists. On Facebook, you make friends, so they know कि आपका प्रोफाइल क्या है और आपके दोस्तों का प्रोफाइल क्या है, आपके दोस्त किस टाइप के दिखते हैं. They know where you work because in most cases you share where you work, you share emails, work emails. Plus, they know your location and timing. So it knows that every day for 8 hours you're working in so and so place. Every night for 10 hours you're sleeping in so and so place. They know your education, how educated you are, because you've already shared so many things on your email. So basically, and these are just some of the parameters. What I'm trying to tell you is that everything that you're doing,
while you're using an app, the app is storing all this data at the back end. And this becomes the crux of targeting. So basis all this data, these apps don't reveal your identity to brands, but basis your own data, uh, they're able to tell brands that if you want to target people of certain kinds of profiles, these are the people you can target. Okay, I'm going to stop class today here. I just wanted to explain this concept today, because कल मैं क्या करूँगा, कल मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, मैं आपको Google AdWords console दिखाऊंगा, and then I will tell you how Google targets different people, not just by keywords, but also, for example, by location. And I'll pick one of them. I'll pick location, and I'll show you how location works in Google AdWords. So how can you target people in a particular geography? I understand some of you might be working and running businesses which are very catchment oriented. कुछ businesses ऐसे होते हैं जिसमें आपको ads दिखाने हैं लेकिन खाली बॉम्बे में दिखाने हैं, because you're probably a restaurant, और restaurant में 6 किलोमीटर से ज़्यादा कोई travel नहीं करता है. That's what research says, that for retail needs people travel only 6 kilometers at the max. तो 6 किलोमीटर के radius में कैसे लोगों को target करना, these are things that are available on consoles. ये 6 किलोमीटर के अंदर कौन कौन है, कैसे पता चलता है? वेल, ये आपके स्क्रीन पे है. This is how apps understand different facets about humans, and hence this data becomes available to brands and to applications to target them. Okay, all right, thanks everyone.